So welcome to all Google Developer Student Club previously, and now it's Google Developer Groups on Campus UMT for this tenure. And this is our first session, orientation session, and in this session we'll just talk about the introduction to our team, the newly selected core team. Congratulations to all those guys as well. And then we have a very special message from our community manager, Google community manager Huzaifa Habib. So we'll present play that as well. एंड उसके बाद कुछ डिस्कशंस करेंगे, कुछ फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करेंगे, कुछ अपकमिंग इवेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, एंड देन फर्दर ऑन हम प्लान करने जा रहे हैं फॉर द कम्युनिटी, सो उसको डिस्कस करेंगे. एंड एट द एंड a very interactive Q&A for all of you guys. Okay, so without further ado, we'll start. Just a minute. Okay, so we are so happy to have you here with us. Actually, the session is being recorded, and after this session, you will get the recording as well on our YouTube channel. So don't worry about that. So you will get the recording. Okay, so let's talk about the agenda. So we'll just, as I said, welcome all of you. And secondly, I'll just talk about the GDG on campus introduction. GDG on campus क्या है, हम इस तरह से गूगल का ये जो इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से हेल्प आउट करता है, हम इस पूरी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. देन वी हैव दैट स्पेशल मैसेज फ्रॉम आवर कम्युनिटी मैनेजर, विल प्ले दैट. उसके बाद एग्जीक्यूटिव टीम लीड एंड को लीड्स वो अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, एंड देन कोर टीम अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ऑल द लीड्स, and then we'll start talk about the future events, and in the last Q&A. Just an orientation simple session, right? So what is GDGoC? Anyone from you guys? Most of you शायद इसको JDSC के नाम से जानते होंगे. JDSC Google Developer Student Club, UMT, but now it has been renamed. Google ने किया, we don't know. It has been named Google Developer Group on Campus. Okay, so how many of you already know about this thing? Yeah, we'll tell about it's a GDGoC UMT channel. We'll share the link as well. You will get the recording on the community dev page as well, so don't worry about that. Okay, so किस को पता है क्या है GDGoC? जरा hand raise करें और just type in the chat. Who knows what is GDGoC? Anyone? Yeah, Musa? Yes, मेरे Musa? मुताबिक ये तो गूगल ड्राइव पर चैनल जाकर स्टूडेंट्स को गूगल डेवलपमेंट में पता चल जाता है क्यों किस चीज़ का स्कोप क्या है. आई गेस यही होगा. Okay. कोर्सेज तो क्या होंगे वहाँ पे. Okay. Anyone else? Yes, Adan, our previous lead. Welcome to the team. I think, can I answer this? Yeah, you can. You're the most worthy one here, I guess. Okay, so जिन लोगों को नहीं पता तो आई एम द एक्स GDSC लीड which is now renamed to GDOC. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रीज़न ये है कि GDSC हिरार्की में सबसे स्मॉलेस्ट लाइक लोअर लेवल क्लब्स थे which were in यूनिवर्सिटी, और फिर इसके ऊपर कम्युनिटी ग्रुप्स थे जिनको GDGs कहते हैं. तो GDGs आर फॉर प्रोफेशनल्स, GDSC was for students. तो GDSC सारे कैंपसेस को नाउ दे हैव जॉइंड अंडर GDGs. तो जो GDG लाहौर कम्युनिटी है दैट विल बी मैनेजिंग GDSC क्लब्स, तो इसलिए उसको GDG ऑन कैंपस से रीनेम कर दिया. एंड सेकेंडली दिस कम्युनिटी इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग गूगल प्रोडक्ट्स. और गूगल का इनिशिएटिव इसलिए था बिकॉज व्हेन पीपल स्टेप इनटू द मार्केट तो they have different options to choose different technologies. तो अब वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी जा सकते हैं, दे कैन गो फॉर ओरेकल या अदर डिफरेंट बिग क्लाउड प्रोवाइडर्स. डिफरेंट हर चीज़ की डिफरेंट डोमेन के अंदर देयर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. गूगल वांटेड कि लोग अब उनकी टेक्नोलॉजीज को अर्ली अडॉप्ट करें. सो दैट इज द रीजन दे इनिशिएटेड दिस कम्युनिटी. और ये आई थिंक बैक इन 2017 वाज द
फर्स्ट सेशन इसका GDSC का, जब इन्होंने कम्युनिटी वाला सारा सिस्टम इनिशिएट किया था. Yeah. एंड आफ्टर दैट पाकिस्तान में लाइक इट कंटिन्यूड आफ्टर 2019. और UMT का दिस इज द थर्ड ईयर ऑफ दिस चैप्टर. तो एक छोटा Yes. सा इंट्रोडक्शन ये है. बाकी ऑल ऑफ दीज गाइस फ्रॉम द टीम दे विल हैंडल इट फॉर यू. और बाकी नूर, अप टू यू. Yeah, thanks Sadan, Jeff, for the clarification and the very brief introduction of what JDSC is and what is GDGoC. For all of you who still didn't caught up, so गूगल ने क्या किया, गूगल ने एज यू ऑल नो दीज बिग टेक कंपनीज ये सब स्टूडेंट्स को एम्पावर करती हैं एंड वो अपार्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी व्हाट दे डू दे एम्पावर स्टूडेंट्स एंड वुमेन्स एज वेल. सो उसके लिए क्या किया गया, माइक्रोसॉफ्ट का आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट आल्सो हैज अ स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम, Amazon आल्सो हैज अ स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम. इसी तरह से गूगल ने भी इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया एज सदैन सेड अराउंड 2016-2017. It's a university-based community groups which is designed for students interested in Google developer technologies. Okay, so not specifically Google technologies. आप इसमें majorly हम Google की बात करते हैं, but you can tell anything जिसके ऊपर आपको grip है या जिसके बारे में आप सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं. It's just a networking community group. Okay. I'm the third lead here. Sadan was the second one, and the Aman was the first one who started this journey in UMT. In this year, we are very blessed, or you can say graceful. पाकिस्तान में 40 लीड्स सिर्फ सेलेक्ट हुए एंड वी आर द वन ऑफ देम एंड इट्स अ हाईली काइंड ऑफ यू कैन से अचीवमेंट फॉर अस बिकॉज बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के लीड्स इस दफ़ा सेलेक्ट ही नहीं हुए, एलिजिबल ही नहीं किया गया. सो दिस इज़ द वन थिंग. Okay. Second, what's the purpose and the goals of this chapter and this group? We have to understand that. So सबसे पहले जो एक चीज़ है जो from my जो जब मैंने ये ग्रुप स्टार्ट किया या इसमें ज्वाइन हुआ इन माय फर्स्ट सेमेस्टर, सो पीयर टू पीयर लर्निंग, इस चीज़ के बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कशन आगे बात करेंगे. सो बेसिकली इसमें क्या था कि वन टू वन फ्रॉम मैं सीनियर से सीख सकता हूँ, मैं जूनियर्स को सिखा सकता हूँ. सो दिस कोलैबोरेशन इज very much you can say foster a learning environment where students can teach and learn from each other about various technologies. तो उसके बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कशंस करेंगे. फिर then you have community engagement, skill development, all the stuff. So this is what GDSC is, GDGoC is, Google Developer Group on Campus, and we have a chapter from UMT. So this is the GDC UMT chapter. Okay. For further ado, we have a very special announcement for our community from the community manager Huzaifa Habib, who's basically handling the Pakistan, Bangladesh, and the Nepal region. All the JDS is under GDGOC's chapters are under him. So let's hear हमारे कम्युनिटी मैनेजर सब क्या कहते हैं एंड उनका अपना एक्सपीरियंस क्या है चीज़ है. He's a very kind of interesting guy. I learned a lot from him. So yeah. Hi everyone. Thank you so much for joining in. I'm Huzaifa Habib, the community manager for South Asia Frontier region at Google. I'm looking after Pakistan, Nepal, Sri Lanka, and Bangladesh. And mainly I'm looking after the program like Google Developer Group, Google Developer Group on Campus, and Google Developer Experts, which is broadly our Google for Developers program. I'm really excited to see these many people joining in to know about what Google Developer Group on Campus is, how community works. So just sharing a couple of minutes highlights and how it started and what is association with me. So I myself somehow was part of this program called Google Developer Group on Campus because at that time when I was engaged with the community, there was no GDSC Google, which was called Google Developer Group, Google Developer Student Club program, which has been evolved now to Google Developers Group on Campus. So with that, I started my journey like this around 8 years ago. And down the road, I have become part of different communities and just become part of Google Developer Group chapter. I lead that. And now currently I'm
I got this job just because of this community work. So I would like to say some key takeaways. And I'm definitely sure about that leads, they will definitely help you to understand what the program is, what you can get out of it, how a community works, what is expectations that you can get set from this particular program, and how uh, they themselves plus the community can help you. So the program has been recently evolved from Google Developer Student Club to Google Developer on Campus. And with evolution, we know that there are some good changes that comes in. Now we'll be more intact. So it's more of like a structured program. Just we do have Google Developer groups, but it's more on a campus. So with that, I would just like to say that the most important thing or the core is that what you are contributing to the community and what are the takeaways from the community. So when I started my journey, I just did the contribution just for the sake of community. So I used to say that when I was a student, I built a community and the motto was for the student, by the student. So this is how I started, and this is how I get into the Google developer community ecosystem. And I would just like to say this is just a start. Maybe down the road, one of you could be sitting in my place and I might be in a different place. So this is how it works. I never expected that this will happen. The dream job will come like this way. But it's just because of the contributions. It's just because of the selflessness. So the community work is definitely selfless one. And then volunteering effect is very important. Sometimes at times you will see that like you're contributing, you're volunteering, but there are no instant gains. But eventually you are upskilling yourself, you're helping your peers. So it's a more of a peer-to-peer learning. So within just like I'm around, you have your on campus leads now. You can get in touch with them, you can get the mentorship, you can get the right tools and technologies, particularly the Google technologies, and definitely the boom of AI. So definitely I'm expecting that a lead will be upskilling and training the students in AI space for the future generation. So I would not take much of time. I know there is a lot of amazing things line up in the agenda. They will give you the insights about Google Developer Group on campus program and much more. But I'm dropping here just to drop these couple of messages that I have learned from my community journey. So now it's the turn to pass it on to you people. I'm really glad to see that the Pakistan developer ecosystem is growing in a fast pace. And I wish you all of you very good luck and stay in touch with your lead and us. We are happy to help. And I wish I could spend more time with you. And I'll try my best to visit some of the campuses. But for now, I'm just dropping this message. I hope I hope you will learn a lot from our community ecosystem and contribute back towards the community. With that note, I would say I will leave to our leads to proceed further. Thank you so much and wish you good luck. Yeah, this was our lead community manager, Huzefa Habib. A very nice and a warm welcome and a motivational message for all of us. Uh, we'll have a Q&A at the last. So, कुछ लोग questions पूछ रहे थे. Okay. So, with that being said, so welcome to our team. Let's introduce our team. So, सबसे पहले executive team का हम introduction करवाना चाहेंगे. So, my name is Noor Hassan, as you can see. I'm the campus lead for 2024 and 25 session, and I'll be the one who's running the things behind the scenes because actually the team is doing everything. Second, we have Mohib here. Mohib, he's our actual guy, and he's the genius behind all the design and the post you saw and everything. And he's actually leading the non-technical part as well. So yeah, Mohib, over to Assalamualaikum you. everyone. Assalamualaikum everyone. As you know, आपने हसन भाई ने बता दिया. मेरा नाम मोहिब है. I'm from third semester BSAI.
सो आई विल बी मेनली लीडिंग नॉन टेक डिपार्टमेंट्स. हमारे जितने भी मीडिया के काम होंगे, मार्केटिंग, पीआर और ग्राफिक्स वगैरह, वीडियोग्राफी एक्सेट्रा, वो सब भी मेरे अंडर होंगे. तो बाकी आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरीज होंगी एट द एंड ऑफ द सेशन, या आपको कभी भी अगर आप कोर टीम मेंबर हो इनमें से सेशन में से, तो आप मुझे रेफ़र कर सकते हो. आप जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इन द फ्यूचर इंशाल्लाह, या जो भी थ्रू आउट द टेन्योर, तो होपफुली वो सब हम डील करेंगे. और जितने भी इम्प्रूवमेंट्स वगैरह होंगी, अगर आपके कोई सजेशंस वगैरह भी होंगी, तो इंशाल्लाह हम कंसिडर भी करेंगे. आप बता सकते हो ऑन द वे. सो बाकी onwards to Sibba. Assalamualaikum everyone. I'm Sabwa Zishan. I'm the co-lead. Basically, I'll be dealing with all the females here, and I have मेरा main motive यही था join करने से पहले कि I want all the females because in our communities females की percentage बहुत ज़्यादा कम है. तो मेरा main motive यही था कि I want to push up all the females tech community में. And I'll be dealing that mainly. उसके अलावा I am working alongside Mohib, and if you guys face any issues during the tenure, you guys can reach out to me. उसके अलावा हमारे बहुत सारे plans हैं, especially for women, जो कि हम लोग स्पेशली हर अपने मंथ में इवेंट करवाएंगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स. और उसको बेसिकली रिश्मा लीड करेंगी, जो कि हमारे वुमेन एंड टेक की लीड है. So over to her. Thank you. Yeah, Ishmael, over to you. Okay, hi everyone. This is Ishmael Fatma. So, if talking about myself, I'm working as an IT programmer analyst at Stewart Pakistan. It's a US based company. And as far as women in tech is concerned, this space is like dedicated to empowering women only. Our main mission is like to help bridge the gender gap in technology, which we all can see. All right, and the main motive is to ensure everyone's voice is heard and valued. You can ping me anytime if you face any difficulty or you feel you're not being valued or heard. Thank you. Okay, thanks Ishmael and Mohib and Sibga. So over now, we have our web lead, a very vibrant guy, Khaja Bilal, and he's the president of Surge as well. I hope you may have heard about Surge as well. So yeah, Bilal, over to you, bro. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू वेल. जैसे नूर ने इंट्रोडक्शन दिया मेरा, माय नेम इज़ ख्वाजा मोहम्मद बिलाल. आई एम द करंट वेब लीड फॉर दिस टेन्योर. तो basically I'm also the president for Surge. Being the lead for the web development team, my main goal is to promote web even further because आप लोगों में से भी ज़्यादातर यहाँ पे web की फील्ड के लोग होंगे. And we actually got a lot of applications इस साल भी for the web core team, and I'm proud to say कि हमारी टीम भी इस साल भी बहुत strong है, and I cannot wait to introduce them as well in the, soon as well. So हमारे आगे बहुत heavy किस्म के plans हैं for especially for the web field. So उसके अलावा we're also aiming, जैसे नूर ने बताया, सर्ज एक इवेंट है. अगर if you don't know, it's a hackathon which is going to take place in UMT this sometime this month. So it will have different categories including web development and speed programming. So if you have not registered yet, so please do go ahead and register. So it will help you gain a lot of experience in the field as well, or different आपको professional से मिलने का मौका मिलता है. You find out a lot about the field as well and get to meet a lot of people in the industry. So I think that's all from my side, Abhi. Feel free to reach out to me on my WhatsApp, Instagram, LinkedIn, wherever. So I'm always available to help. Thank you. Thanks, Bilal. So the one guy is asking about hackathon. We will talk about that at the end. क्वेश्चन आंसर हम करेंगे. हम फ्यूचर प्लान्स के बारे में, हमारे क्या कौन से फ्यूचर प्लान्स हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लान्स हमारे पाइपलाइन में, हम उनके इंशाल्लाह बारे में बात करेंगे. And everything will be done after the introduction. Thank you. Okay, so Abdullah, our AI ML lead, the person who's running the AI strings here. Abdullah, are you here, bro?
Okay, I think so. आई गेस उनका कोई इशू चल रहा है, आप ही उनको कर दें इंट्रो। Okay, 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 okay. So Abdullah is basically is issue. ठीक है, तो Abdullah is basically AI BS AI कर रहा है 7th semester, and ही इज़ AIML टीम लीड। और जितने भी आपके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और आपके दूसरे टास्क होंगे रिलेटेड टू एआई, दैट विल ऑल बी हैंडल्ड बाय हिम और इसकी अमेजिंग टीम जो इन्होंने गैदर की है आफ्टर द हेक्टिक इंटरव्यूज एंड ऑल दो स्केड्यूल्स। ओके, सो अब्दुल्ला इंशाल्लाह थोड़ा लास्ट पे आपको अपना इंट्रोडक्शन खुद भी करवाएगा और विल टॉक अबाउट द फ्यूचर प्लान्स एज वेल। नाउ वी हैव मोहम्मद उजैर, ऐप डेवलपमेंट लीड, or he's a amazing guy. Previously, he was a web dev lead. Now he's app dev. So, back introduction. Over to Zaire, bro. Come in. Okay, bro. Thank you. I think so. Abdullah. Abdullah will join later. Okay. Okay. So with that being said, we have the cybersecurity team as well, and we have a Gen AI team as well. So I'm the Gen AI lead as well. We didn't find very good candidate there, so I'll be talking about that as well. So इस tenure में what we are planning कि जैसे आप सबको पता होगा कि जनरेटिव एआई का एक बहुत बूम चल रहा है आफ्टर द चैट जीपीटी एंड इवन रिसेंट कुछ इवेंट्स की वजह से। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं रिलेटेड टू जनरेटिव एआई लेके, बिकॉज आपको ना एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने का, डीप लर्निंग इंजीनियर बनने का एक रोड मैप मिल जाता है। जनरेटिव एआई का रोड मैप अभी तक बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, कैसे करें तो हम एक जनरेटिव एआई एक्सपर्ट बन सकते हैं। और इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इवन विल एग्री, फ्रीलांसिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपको जनरेटिव एआई की अब जरूरत पड़ रही है। तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे, सेशंस करेंगे, बूट कैंप्स करेंगे इवन दो, एंड विल बिल्ड प्रोजेक्ट्स एज वेल, सो फॉर ऑल द कम्युनिटी। सो जनरेटिव एआई की जो एक कमी महसूस की जाती है इन द एआई वर्ल्ड, इंशाल्लाह हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। या तो विद दैट फर्दर अडू विल स्टार्ट नेक्स्ट। So you're not alone in this journey. We all will do this together. अगर आप में से दूसरी कोर टीम हमारे में से जो बाकी हमारे मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं अंडर द लीड्स, उनमें से दे आर द वेरी बेस्ट एंड द बेस्ट गाय वी कैन एवर फाइंड इन यूएमटी। तो हम उनको इंशाल्लाह साथ लेके चलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेंबर्स जो कोर टीम का हिस्सा नहीं बन सके, इफ दे हैव एनी सजेशन, एनी क्यूरी जो हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, जो हमें वो बताना चाहते हैं, सो दे कैन रीच मी आउट एज वेल, दे कैन रीच एनी ऑफ द लीड एज वेल। सो इंशाल्लाह हम मिल के काम भी करेंगे। इफ यू हैव एनी कोलैबोरेशन proposal for us, we'll collaborate as well. So yeah, you're not alone. The point was this. Okay, so सबसे पहली बात, अगर हम थोड़ी सी रूल्स की बात करें, कि व्हाट्स द रूल फॉर जीडीजी ऑन कैंपस लीड, हमारे में रूल का पर्पस क्या है। सो फ्रॉम माय साइड अगर मैं इस चीज़ को देखा जाए, आई वाज एआईएमएल लीड इन माय फर्स्ट टेन्योर विद अमान इन सादेन। आई वाज द को लीड एंड नाउ आई एम द लीड। सो 2 years में मैंने इस पूरी जर्नी को फ्रॉम 150 200 members, right now we have grown more than like 2500 to 3000 members. So इस पूरी कम्युनिटी जर्नी के अंदर जो चीज़ मैंने नोट की है, डेट इज द कम्युनिटी बिल्डिंग एंड द लीडरशिप स्किल। सो लोगों को उस क्लब के अंडर लेके आना, इवेंट्स को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना एंड एक एफिशिएंट वे में उनको डिलीवर करना, दैट इज द एक्चुअल लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे लोग सीख सकें और एक कम्युनिटी के अंदर, एक वाइब्रेंट कम्युनिटी के अंदर एक इम्पैक्टफुल इवेंट क्रिएट किया जा सके, वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके। सो या दैट इज आवर रोल। और कोर टीम की अगर बात की जाए,
कोर मेंबर्स व्हाट आर देयर रोल्स. सो कोर मेंबर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, इवन दो आई जेन्युइनली बिलीव के आफ्टर लीड, इफ यू हैव अ लीड, इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोर टीम, तो वो चैप्टर बहुत सक्सेसफुल रहता है. वी हैव सीन द एग्जांपल्स एज वेल. सो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी आपके अंडर, जितने भी आपके कोर इवेंट्स हो रहे होंगे, वेब के, ऐप के, साइबर के, जन एआई के, सो ऑल विल बी हैंडल्ड बाय योर लीड्स एंड द कोर टीम अंडर द लीड्स. सो या, those are the actual guy on the ground. Okay, okay. So with that being said, if I talk about Google technologies, so what we are talking about, so हम इंशाल्लाह जब फ्रंट एंड की बात करते हैं तो वी हैव अ गूगल हैज ग्रोन सो मच. तो हमारे पास तकरीबन हर एक फील्ड के अंदर ही गूगल की टेक्नोलॉजीज हमारे पास अवेलेबल है. सो हम गूगल की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर सेशंस करवा रहे होंगे, हम बूट कैंप्स करवा रहे होंगे, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेसेस, गूगल कंसोल, जेमिनाई एआई, जनरेटिव एआई, गूगल क्लाउड. तो हम इंशाल्लाह इन सब चीज़ों के ऊपर इवेंट्स करवा रहे होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गूगल सो स्पेसिफिकली. सो जो भी आप सजेशन देते हैं या जो हमारे लीड्स और जो उनकी कोर टीम डिसाइड करेगी कि दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह हम उसको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसको भी कम्युनिटी के सामने लेके आएंगे. या सो दिस इज फ्रॉम आवर साइड. सेकंड, जेमिनाई के ऊपर मैं खुद भी बात करना चाहता था. द रीजन इसके बहुत सारे लोगों को जेमिनाई पता नहीं होगा या उसको बस बेसिक लेवल पता होगा कि हमने यूज कर लिया. सो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर डिटेल्ड बूट कैंप हमारा प्लान है करवाने का, ऑन विच कि आप बेसिकली एक्चुअली जेमिनाई की एक्चुअल कैपेबिलिटीज को यूज कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग एज वेल, विद द हेल्प ऑफ जेमिनाई प्लेग्राउंड एज वेल, एंड मैनी अदर थिंग्स एज वेल. So yeah, there are many things to come. Okay. With that being said, you can join our WhatsApp community if you're not the part of it. So आप I'll just take a minute here. Okay. So ठीक हो गया. ओके. सो यहीं पे हम जो है थोड़ा फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं. आई विल जस्ट गो टू माय टीम, और वी हैव मोहिब एंड वी हैव मोहिब एंड सिबगा हियर. तो सिबगा एंड रिशमाइल, सबसे पहले आई वांट के आप दोनों जस्ट टॉक अबाउट द वुमेन इन टेक इवेंट्स और इंशाल्लाह कोलैबोरेशंस में, और जिस तरह के आप सेशंस करवाएंगे, कुछ करवाएंगे. सो जस्ट टॉक अबाउट दैट, अ लिटिल introduction for all the female participants here, जिनको पता चल जाए कि at least what they will be getting out of it. Alright, guys. For the female events, basically I have planned with Rishmail. अभी जो हमारा नवंबर में हम लोग प्लान कर रहे हैं to talk about how we can get women confident and public speaking पे basically हम लोग बात करेंगे. This is our initial plan. उसके अलावा यहाँ पे जितने भी females हैं, if you guys have any suggestion, तो आप लोग हमें reach out कर सकते हैं. And उसके अलावा we have planned हम लोग speaker sessions करेंगे. We will try to invite females जो कि इंडस्ट्री में काम कर रही हैं इस टाइम पे, तो ताकि हम लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर अपने इवेंट्स भी करवाएंगे. एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम जितनी ज़्यादा जो लड़कियां हैं जो कि लाइक हेजिटेट करती हैं आगे आने में, हम लोग उनको एम्पावर करने की कोशिश करें. एंड दीज आर आवर प्लान्स. उसके अलावा रेशमाइल आपको और थोड़ा सा बताएंगे. उसके अलावा आप लोगों की तरफ से कोई भी सजेशन है तो आप लोग हमें रीच आउट कर सकते हैं, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग उसको केटर करें. थैंक यू. Okay, so yes, mostly is covered by Sibka, but we all know कि फीमेल्स के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. अगर हम देखें तो अगर ये तीसरा साल है इस चैप्टर का, तो ये टीम फर्स्ट टाइम बनी है. सो द कोर मिशन इज़ टू गिव वुमेन प्लेटफॉर्म. लाइक वी आर इक्वली इन्वॉल्व. आई एम वर्किंग, तो मुझे पता है कि वी आर वर्किंग लाइक फॉर इक्वली ऑर्स. एंड जो कंट्रीब्यूशन है हमारा वो इक्वल है, बट प्लेटफॉर्म हमारे पास कोई भी नहीं है टू टॉक, टू जॉइन इवेंट्स. So we are giving you a platform. You can ping me and Sibka anytime you want to, and yes, we'll be doing a lot for you.
Okay. Thank you, Ishmael and Sibga. Sibga, yes, you want to add something? Okay, no. So yeah, a very feminist thing, but नहीं, we all should and we all want to empower women as well. So tech के अंदर हम सबको पता है कि it's not a very common कि कोई tech के अंदर ज़्यादातर लड़कियां या women's females अपना role play करें. So it's already a male dominant field. तो why not कि हम students अपने level पे एक कोशिश करें and इस चीज़ को empower करने की कोशिश की जाए. Okay. With that being said, we have our app and web leads. So I think आप दोनों Bilal and Uzair, you should share something to your audience and to your uh, team members as well. So yeah, over to you, bro. Okay, I think I'll go first. Uh, okay, like I said, like I mentioned, I'm the web dev lead. So अब वेब डेव एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत सैचुरेटेड है. इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन because it's a good gateway for new students, for new programmers to get into tech. मेरे लिए भी वेब डेवलपमेंट वो वाली फील्ड थी, which just bootstrapped me to the tech field. I started out self-learning, and web seemed as the most easy solution and the best solution to get into it. तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी जो हैं वो वेब की तरफ लीन करते हैं. तो हमारा भी यही मेन गोल होता है कि यूनिवर्सिटी में बिकॉज़ इट्स सैचुरेटेड और हर जगह जॉब्स अवेलेबल होती हैं वेब की, तो इसी तरह हम उसके भी आगे और प्रमोशन करें ताकि इवन इफ़ यू हैव अ प्री मेडिकल बैकग्राउंड या आपकी टेक की बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, यू कैन स्टिल गेट स्टार्टेड इन टेक थ्रू वेब एंड यू कैन मूव ऑन टू अदर फील्ड्स बिकॉज़ अगर आपको वेब क्लियर हो जाती है एंड यू गेट कंफर्टेबल इन वेब, you can move on to other fields pretty easily as well because it helps you in making your basics strong, making your whole root strong in the tech field. तो इसी तरह हम डिफरेंट जो हैं वर्कशॉप्स सेशंस करवाएंगे रिलेटेड टू वेब. अब जैसे नूरुल हसन ने वो स्लाइड दिखाई जिसमें गूगल की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज थी, उसमें फ्लटर थी, उसमें एंड्रॉयड थी. उज़ैर एंड्रॉयड का ऐप का लीड है. इस बार तो हम डिफरेंट ऐप के भी वर्कशॉप्स करेंगे और फ्लटर भी बिकॉज इट्स अ होल वन, it's like a Java thing कि write once and use everywhere. तो हम Flutter के भी कुछ workshops रखेंगे. इसी तरह हम different front-end technologies, back-end technologies like Google की Golang है, उसके लिए भी हम different workshops रखेंगे, sessions रखेंगे, and just to help you guys get started on web and improve gradually. Because हमारा plan है कि हम आपको शुरू से शुरू करवाएं even if you have no experience whatsoever in the field. We will get you started. We will help you out. हमारी team इस साल especially for web is very strong. So everyone is a professional in their own field. They're working professionally. उनको अच्छा भला 3-4 साल का experience है. So they will be always available to help you out and mentor you in the web field. तो इसी तरह हम front end के भी technologies के बारे में पढ़ेंगे, web के बारे में back end के बारे में पढ़ेंगे, दोनों को connect किस तरह करना है and everything in between. So I hope this does explain a bit more about what we're planning for web. So over to you, Zair. You can explain the app. या श्योर. जैसे कि ना अभी बिलाल ने मेंशन किया कि वेब की मार्केट काफ़ी सैचुरेटेड है एंड दैट्स ट्रू. अगर मैं ऐप डेवलपमेंट की बात करूँ तो मार्केट इसकी भी थोड़ी सी सैचुरेटेड है क्योंकि ना इसमें भी टाइम टू टाइम ना बहुत बंदा इन्वॉल्व हो रहा है. इसको टाइम टू टाइम ऐप को जो है ना ईजियर बनाया जा रहा है ऐप डेवलपमेंट को. जैसे हमारे पास रिएक्ट नेटिव आ गई है. रिएक्ट नेटिव हर कोई वो कर सकता है, इसको वेब आती है या रिएक्ट आती है और बहुत ईजी होती है रिएक्ट नेटिव. इट्स वेरी इजी पाथ फॉर अ वेब डेवलपर. सो इसके अलावा इसके बाद हमारी जॉब की काफ़ी अच्छी सर्विस भी मिलती है हमें. इसकी जॉब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाख 1.5 लाख. इसके अलावा अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात करूँ तो फ्रीलांसिंग में भी काफ़ी इसकी जो है ना हमारे पास डिमांड है. अब फॉर एग्जांपल कोई अगर बंदा वेब बना रहा है तो अगर उसका एक बिजनेस स्टेब्लिश होना है तो मोबाइल ऐप इधर लाजमी आता है क्योंकि उसने ऑडियंस को तो किसी ना किसी तरह टारगेट करना है ना. सो आवर मेन गोल इन ऐप यही होगा कि हम फ्लटर पे फोकस करें और रिएक्ट नेटिव पे फोकस करें और इसकी वर्कशॉप्स कराएं. उसके अलावा इसको हम इम्प्लीमेंट कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं,
इसकी जॉब्स क्या हैं मार्केट में, फ्रीलांस वैल्यू कितनी है, तो ये सब चीज़ें हम करेंगे इसमें डिस्कस। होप सो। ओके, थैंक यू गाइस। सो अब्दुल्ला, आप रह गए थे, जस्ट जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और उसके बाद इंशाल्लाह हम क्यूएनए पे चलते हैं। आई थिंक सो काफ़ी कोर टीम मेंबर्स के पास और दूसरे मेंबर्स के पास काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, तो इंशाल्लाह फिर हम उसके ऊपर चलते हैं। ओके जी अब्दुल्ला। ओके, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और सॉरी मैं पहले नहीं आ सका था। दरअसल हुआ ये था कि लाइक फॉर 20 मिनट्स में बैठ के ब्लैक स्क्रीन देख रहा था और मैं कहता कुछ बोल क्यों नहीं रहा। और फिर मुझे पता चला कि मैं मेरे अपने ब्राउज़र में इशू था, ना मुझे कोई साउंड आ अब्दुल्ला, रहा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। था। जस्ट गिव मी अ मिनट। इज़ इट बेटर नाउ? हाँ, इट्स बेटर नाउ। ओके। अच्छा, मैं यही कह रहा था कि मैं जॉइन कर चुका था, लेकिन ये था कि अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ। वो मेरे ब्राउज़र का अपना एक इशू चल रहा था, मेरे ब्लैक स्क्रीन शो हो रही थी। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हसन ने बता दिया कि AIML को लीड कर रहा हूँ इस टेन्योर में, और इंशाल्लाह आई होप कि हमारा बहुत अच्छा सेशन जाएगा। हमारे पास इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, अतर है, अरमान है, हसीब है और अब्दुल्ला मीर ने हमें ज्वाइन किया। लाइक दे आर the people who have been doing work in this field from really long time, और वो बहुत पैशनेट हैं इस बारे में। लाइक दे आर नॉट लाइक दोज शीप्स जिन्होंने बस AI का नाम सुन के ज्वाइन कर लिया। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि AI को जितना इजी करके, क्योंकि आज कुछ लोग समझते हैं पता नहीं AI है तो क्या ही होगा। सो इट्स नथिंग मोर देन जैसे अदर हमारे पास फील्ड्स हैं, वेब है और ऐप है, उसी तरह AI भी है। और ये कोई बहुत बड़ी बला या नई चीज़ नहीं है। 1950s से 60s से इस पे काम होता आ रहा है। नो डाउट अंदर एक कोल्ड टाइम आया था, बट देन अगेन अब आपके सामने AI के जो ख़ास तौर पे ChatGPT के बाद जो बूम है, तो दैट वाज ऑल। और आई एम विशिंग यू ऑल लक। लेट्स मूव टू द Q&A। हसन। आया। सो आई होप सबका इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया। यस, ओके। सो जी, बैक टू द क्यूएनए। आप सबके जो जो सवालात हैं, जो भी आपने चीज़ें डिस्कस करनी है, योर सजेशंस, योर फीडबैक। इट वाज आवर फर्स्ट इवेंट, सो इफ़ यू वांट से समथिंग कि आप किस तरह से चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो वुड लव टू हियर दैट। यस, ओवर टू ऑल द अटेंडेes। एंड जस्ट हाय। सदैन ने भी एक स्पॉइलर दिया है कि गूगल क्लाउड इंजीनियर इज कमिंग टू यूएमटी, सो या that is, you will get the notification as well. Yes, questions you can write on in chat or you आई can हैव अ just क्वेश्चन। raise it. Yes, yes. मैं कंफ्यूज हूँ कि किस में जाऊँ, वेब डेवलपमेंट में जाऊँ तो ऐप में। अभी भाई ने बात की है कि उससे भी कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। मार्केट ऐप की भी सैचुरेटेड है और वेब की भी पहले सैचुरेटेड है, बंदा कहाँ जाए। गेम का तो स्कोप ही नहीं है पाकिस्तान में। Okay, Okay. so I think Bilal and Yeah, can I Uzair. answer that question? Yeah, yeah, you can. ओके। आपकी भी बात सही, मैंने भी बोला कि दोनों मार्केट्स सैचुरेटेड हैं बहुत, लेकिन बीइंग सैचुरेटेड डजंट मीन कि कंपटीशन बहुत है। ठीक है, बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल डेवलपर एज वेल। वी ऑनेस्टली आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर डेवलपर्स। मसला ये है कि वी फाइंड द डेवलपर्स, लेकिन वी डोंट फाइंड द डेवलपर्स दैट आर कॉम्पिटेंट इनफ। देर वो ज़्यादा कोशिश नहीं करते, वो बस वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा काम आता है, एंड देर जस्ट वो जॉब के लिए आते हैं एंड दे एक्सपेक्ट टू गेट पेड इन लाख एंड करोड़। तो हमारा ये गोल है कि आपको सिर्फ ये नहीं कि बस आप शुरू हो जो बस ये एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट बना दिया और आपको इंडस्ट्री में भेज दिया। हमने आपको ये बिल्कुल नहीं कराना। हमने आपको इसकी अंडर द हुड सिखाना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज दैट्स द थिंग दैट मैटर्स। बीइंग अ प्रोग्रामर डजंट मीन कि आप कौन सी फील्ड में जा रहे हो। इट जस्ट मीन्स कि आप वट एवर यू डू, यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो अगेन, आपने जैसे पूछा कि वेब में जाएं कि ऐप में जाएं, आप दोनों ट्राई करो। जिसमें आपका दिल लगता है, जिसमें आपका हाथ बैठता है, वट एवर यू लाइक, तो यू कैन गो एंड प्रोग्रेस इन दैट फील्ड। लाइक मैंने वेब से पहले और भी फील्ड्स ट्राई की थी। आई ट्राई साइबर, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगा उस पर। मैंने गेम डेवलपमेंट ट्राई की, मेरा दिल नहीं लगा उस पर। वेब मैंने ट्राई की, वेब में मेरा अच्छा बड़ा दिल लगा। आई वॉज अ फ्रंट एंड डेवलपर इनिशियली, देन आई मूव्ड ऑन टू बैक एंड। तो एज ए engineer you progress as the years go on,
So aim to be a better engineer, a better programmer, rather than कि मैं एक ही फील्ड में सिर्फ stuck रहूं. Okay, I think this answers your question. Yes, anything? I would love to hear any question from girls' side as well. We have good numbers of girls here. So yeah, and Sibga would love to answer that. I think so. Yes. Okay. So Sham ने question एक पूछा है with experience in data science and engineering. Will be doing something in it. Yeah, Sham. If you're a part of core team, so definitely you will. और अगर नहीं तो वी वुड लव टू हियर योर सजेशंस डेफिनेटली. एंड ए आई एम क्योंकि आप मेरा ख्याल है डेटा एनालिसिस के हैं तो ए आई एम एल लीड आपको डील करेंगे. तो अब्दुल्ला कैन टेल यू अबाउट दैट. जी अब्दुल्ला. सॉरी मैं थोड़ा सा जोन आउट हुआ था, मुझे क्वेश्चन बताना. क्वेश्चन इज बेसिकली एहतशाम मोहम्मद ही इज सेइंग कि एक्सपीरियंस इन एनालिटिक्स एंड इंजीनियरिंग विल बी डूइंग समथिंग इन इट. या ऑफ कोर्स, मतलब आप अगर देखो कि ए की बात करें और इसमें जो मोस्ट कॉमन जो हर किसी को नाम पता होगा, आप कहते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग अगर आपने करनी है तो उससे पहले जो सारे डेटा पे काम होना होता है उसके अंदर आपकी डेटा प्री प्रोसेसिंग, जितनी भी डेटा साइंस की फील्ड्स आती हैं, डेटा एनालिटिक्स इंक्लूडेड, तो ऑब्वियसली वो मस्ट है, वहीं से स्टार्ट होगा और देन विल मूव ऑन ग्रेजुअली. ऐसा नहीं कि जंप करके आगे चले जाएंगे, तो एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड. ओके. So Sayyid Hamza said, I wanted to know how to be part of the team and this community. Okay, Sayyid Hamza, you can apply for GDGoC lead, but इस साल की applications तो close हो चुकी हैं, fortunately or unfortunately. लेकिन in next year you can apply, और if you are selected तो आप lead होंगे, and if you're not तो you can apply for the core team as well. So yeah, this is how you can be the part of the community. Otherwise you are member, तो आप सीखो सिखाओ ग्रुप में participate करो active रहो. That is what you can do without any other restriction. Yeah. Okay, Ihtisham, I hope that answers your question. uh, Said Musa. So ये मूसा हम इंशाल्लाह जो बहुत जल्द अपने सोशल्स के ऊपर भी टीम पूरी का अनाउंसमेंट करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मोहिब कैन टेल, हम एक्सेल भी इनके साथ जो हमारी सिलेक्शन टीम हुई है, फाइनलाइज टीम्स हुई हैं, तो आई थिंक सो कि हम वो टीम्स के ग्रुप्स के अंदर उनके नाम्स भी हम शेयर कर देंगे कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ है उसके अंदर से. ओके, we have so much questions here. Just one more question. We have done many programs on AI, but I have a question that can be linked with cyber security. We don't have a cyber okay, so your question, I think so Bilal can answer that. Bilal has experience in cyber security as well. What's the question? The question is, I have done many programs on AI, but I have a question that can it be linked with cyber security? If yes, then it can be linked, but how, that will be Bilal is telling, or Sadan. I think Sadan can answer that. I don't have So, experience in cybersecurity. I would like to answer it QK, because I had a detailed discussion with our previous cybersecurity lead. So that guy is now working in the industry. So iska, the people who are interested in cybersecurity, uske liye we will have some sessions, and I'll also suggest the current lead to have some dedicated sessions. क्योंकि with the rise of AI, तो आपने देखा होगा कि there are many ways जिसमें आप इस तरह के prompts से you can get some internal information from AI, like AI chatbot से. कभी आप रैग परफॉर्म कर रहे हो तो उसके अंदर भी देयर सम सिक्योरिटी इश्यूज. इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी इज आल्सो इमर्जिंग विद एआई. उसकी एक रीजन ये है कि लाइक देयर आर मेनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो इसकी वजह से जिनको राइज मिली है. वन ऑफ द टॉपिक्स आई वाज स्टडीइंग अबाउट वाज इमेज टेक्नोग्राफी. लाइक आप एआई के थ्रू वन अब फिर से लाइक यू कैन लाइक एम्बेड सीक्रेट डेटा सीक्रेटली इनसाइड इमेजेस, और वो एआई जनरेटेड. मैं देख रहा था कि एक नई एप्लीकेशन आई है, आप कोई भी डेटा अपना इमेज के अंदर हाइड करके सेंड कर सकते हैं, और वो वही एआई उसको दूसरे एंड पे डिकोड कर देगा. तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन कि हम इन इतनी सारी इसका स्कोप बिकॉज ऑफ द साइबर सिक्योरिटी इज ओपन. एंड वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग फील्ड्स इज एमएल सिक्योरिटी. और अगर आपका कभी किसी का लाइक आफ्टर बैचलर्स प्लान ऑफ मास्टर्स एंड पीएचडी, तो इनसाइड यूएस आई वाज सीइंग द स्टैट्स, तो इस वक्त सबसे ज्यादा ओपन पोजीशंस आर फॉर कंप्यूटर विजन, एनएलपी एंड एमएल सिक्योरिटी. तो हम इस फील्ड को
ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे. वी विल हैव स्पीकर्स फ्रॉम इंडस्ट्री, और हम ट्राई करेंगे कि गूगल डेवलपर एक्सपर्ट्स में से किसी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट को या किसी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर को इनवाइट करें. तो दैट इज़, आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हो गया हो. तो इसके अलावा इफ़ यू हैव समथिंग यू कैन जस्ट टाइप इट. Yeah, I think that answers his question. And thank you, Sadan, for clarifying this stuff. Okay. Sayed Hamza, का next question है. Physical meetings होंगी? Yeah, we would have physical sessions as well, online, physical. हम hybrid mode पे चलते हैं. तो apart from that, अगर आप physically हम core team से या any lead से किसी से भी आप मिलना चाहते हो in university, you can just message that person or in a group. तो इंशाल्लाह we can do that as well. Okay. Muskan का question है कि I'm really confused for my electives. Like, which should I do for any help? Muskan, can you tell your department? आपका डिपार्टमेंट क्या है? सो आई थिंक हमारे डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे सीनियर्स फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट एसएसटी के, तो दे कैन टेल यू बेटर. ओके. Ghazanfar, are leads or co-leads selected by Google? Yes, Ghazanfar, not co-leads. The leads, like, मेरा 45 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ था. तो Sadan can tell his experience as well. It's a long experience, but it's a very interesting one. So yeah, leads selected by Google, but not the co-leads. Then leads जो है वो under the team, proper team manage की जाती है. So co-leads are basically जो कि actually on ground leads होते हैं. Mohit can second that. Which framework is best for app development? Yeah, Uzair. I believe so. Both React Native and Flutter are good, but if you already know web, so I would say first you should go with React Native, and then if you are eager to learn the second framework, then you should go with Flutter. Okay, I think that answers your question. Muskan का question है, and any plans for people who are new in tech or beginner? So yes, Muskan, why not? हमारा major focus communities का यही होता है कि to empower juniors और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा help की जाए. So बहुत सारे लोग tech को इसलिए भी छोड़ जाते हैं कि उनको ये चीज़ मुश्किल लगती है, और उसकी reason ये है कि उनको कभी help मिल ही नहीं पाती. So हम बहुत जल्दी इसके ऊपर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, डीएसए, करियर काउंसलिंग, इस तरह के बहुत सारे सेशंस करवाने जाएंगे और हमारे होंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आपका इंशाल्लाह अच्छा, उसमें नूर, कटिंग यू ऑफ, मुस्कान का एक और क्वेश्चन था यहाँ पे कि शी आस्क्ड कि मुझे कौन से इलेक्टिव्स पिकअप या करने आई चाहिए. आस्क्ड कंप्यूटर साइंस. तो या यू आर द सीनियर वन. तो उसकी रीज़न ये, आई वुड से वन थिंग कि यूनिवर्सिटी के 30 लाइक आवर्स वाले कोर्स के अंदर, या अपने अगर ये एक नॉर्मल सा लाइक यू हैव 30 लेक्चर्स, दिस इज़ नॉट समथिंग कि जिसमें आपको एक्सपर्ट हो जाओगे. तो आई वुड से एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ फील्ड्स. ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप हर डिफरेंट टाइप्स की फील्ड्स को लाइक ट्राई आउट करो. फॉर पर्सनली मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग ट्राई किया था एंड आई रियली लव्ड इट. और उसके बाद मैंने एनएलपी ट्राई किया था. नाउ आई एम स्टडिंग डेटा माइनिंग, और लाइक बिल्कुल नाउ इवन आई एम स्टडिंग डेटा कम्युनिकेशंस. तो एक बहुत डाइवर्स सेट ऑफ इलेक्टिव्स मैंने पर्सनली पिक किए थे. आई हैव सीन पीपल जो कि सिर्फ एमएल ट्रैक पे जाते हैं, लाइक दे विल पिक अप एनएलपी, एआई, डीप लर्निंग. अब आई एम नॉट श्योर आपके ट्रैक में रोड मैप में कौन से कोर्सेज कंपल्सरी हैं, बट ये जो आई थिंक एआई और डेटा साइंस वाले हैं, दे मस्ट बी इलेक्टिव्स. और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्टिव्स ऑफर होते हैं. तो यू शुड ट्राई आउट डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स. इवन आप एडवांस्ड वेब और वेब टेक्नोलॉजीज भी ज़रूर ट्राई करना. सो इससे आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है. यू गेट टू नो अबाउट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड. अब मैं आपको एक एग्जांपल छोटी सी दे देता हूँ कि एनी एप्लीकेशन या एक कोई आईओटी रिलेटेड प्रोडक्ट है, इट विल हैव सम मशीन लर्निंग अटैच टू इट. उसके अंदर उसकी अपनी प्रोग्रामिंग होगी, उसका डेटा कहीं पे क्लाउड पे होस्टेड हो सकता है. तो आपको लाइक लर्निंग का बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो आई वुड से ट्राई आउट करो. फिर उसके बाद व्हेन यू आर इन द फाइनल ईयर, फिर आपने फिगर आउट करना है कि यार अब आपने कौन सी फील्ड को आगे परस्यू करना है. तो उससे पहले जस्ट कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. Yeah, I hope that answers your question. Uh, Muskan, can I have one session with the web and app leads? Yeah, definitely. I think Bilal and Uzair, wonderful guy, वो काफ़ी अच्छे से आपको accommodate कर सकते हैं इस चीज़ में. You can just connect with them. Okay. आई वांट टू कनेक्ट विद यू पीपल गाइस. या डेफिनेटली आप सईद हमजा, आई थिंक सो आप ग्रुप के अंदर हमारे इस कम्युनिटी हमने ये लिंक पे शेयर किया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो. सो वी आर ऑल ऑलमोस्ट द एडमिन्स देयर. सो आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं. यू कैन पिंग मी डायरेक्टली. लिंक्डइन पे आप सर्च कर सकते हैं. माय लिंक्डइन इज नूरुल हसन. जस्ट टाइप देयर एंड मैं वहाँ पे सामने ही आ जाऊँगा. तो या, इट इज़ पॉसिबल.
Okay, thank you, Muskan. Will we have industry professionals? I think Sadan answered the question. Yes, we will have industry professionals for almost all the fields: AI, ML, app dev, web dev, everything. Okay, Ghazanfar, thank you, bro. I know HTML is just. Should I start with Kotlin or React Native? Uh, Again, Bilal or Uzair? Musa's question. आई थिंक सो बेसिकली मैं क्या रिकमेंड करता हूँ सबको कि बेशक आप एआई कर रहे हो, बेशक आप वेब कर रहे हो, बेशक आप मोबाइल ऐप कर रहे हो, ठीक है। तो आपको जो है ना वेब लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि जो वेब है ना वो बेस बनाती है। आप देखो, आप एआई कर रहे हो, आप मोबाइल ऐप कर रहे हो, या आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हो, एपीआईज आर एवरीवेयर, ठीक है। तो वेब जो थी ना, आपको बेसिक जो बेस है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग देती है कि आपने एपीआई के साथ कैसे वर्क करना है, एपीआईज कैसे बनती हैं। सो वेब लाजमी करें। उसके बाद स्टार्ट विद, आई वुड से, क्योंकि वेब आपने किया तो आई वुड से कि स्टार्ट विद रिएक्ट नेटिव, इट्स बेटर देन कोटलिन। Okay, thank you, Zair. I hope that answers your question. As yeah, as an okay, so कोटलिन guys, इज अ किसी गुड को भी गेम लैंग्वेज। डेवलपमेंट सीखनी होगी ना, तो we have few persons here. Ehsan is one of them. तो इंशाल्लाह हम एहसन गेम डेव के ऊपर भी प्रॉपर इवेंट्स करवाएंगे, एंड आई वुड लव टू ऐड यू इन माय टीम। तो आप बूट कैंप करवाना गेम डेव के ऊपर। डन। ओके गाइस, so yeah, any other question? Also, whether did you join in some uh, Muhammad Talib, we actually don't have a game dev specific lead or the team, but we have SN here. So I think SN can answer your question. SN just okay, just wait a minute. Yes, any other question from any of the attendees? I think बहुत सारी गर्ल्स स्पेसिफिकली काफ़ी चुप भी रही हैं, और आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट अच्छा, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि अगर किसी को आप में से लगता है कि यू कैन रियली बेनिफिट द कम्युनिटी विद योर स्किल्स, या विद, और अगर आप अभी इसका GDGoC का पार्ट नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज, बिकॉज एप्लीकेशन तो ऑफिशियली टीम ने क्लोज कर दी हैं, बट आई वुड पर्सनली रिक्वेस्ट कि बिकॉज आई सी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल के who they want to join the community, तो maybe after a few months we can have another recruitment drive, क्योंकि तब तक we'll have like हमारे स्ट्रीमलाइन इवेंट स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, we'll have a large audience, तो उसके बाद यू कैन कीप एडिंग डिफरेंट फील्ड्स। और अगर आप में से किसी को लगता है कि यू कैन रियली बेनिफिट द टीम एज वेल, तो आप साथ साथ इवेंट्स ज्वाइन करें, एंड यू कैन बी एक्टिव इन द ग्रुप, एंड दिस इज सम वे टू स्टैंड आउट। हमेशा एक ही बात नहीं होता कि आपने इंटरव्यू दे के और इस तरह से, समटाइम्स यू कैन वर्क रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, और वहाँ से आप, people can pick you up if you're very active in the group, we can approach you to join the team। हमने पहले अपने टेन्योर में भी ऐसे किया है, and the people who are here, उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं who came to us, we watched how they work, and now they are part of the core team। yeah, बिल्कुल सदैन, आई सेकंड योर थिंग। ओके, सो इंशाल्लाह हम जो है, जो लोग भी चाह रहे हैं कि दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द टीम, तो जस्ट शो, आप लीड्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे और हम इस पे काम भी करेंगे। हाउ कैन वी जॉइन नाउ, सो आई डिडंट न्यू दिस बिफोर, एंड यू नो इट्स योर लास्ट ईयर ओनली। ओके, सो यू कैन आयशा, यू कैन एक्चुअली जॉइन। आप ग्रुप के अंदर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और आई थिंक यू शुड मैसेज सिबगा, तो सिबगा कैन हैंडल द क्वेरी। या सिबगा? यस आयशा, यू कैन रीच आउट टू मी। आप मुझे टेक्स्ट कर देना, फिर मैं आपसे बात कर लूँगी। एंड यस, यू कैन जॉइन अस स्टिल। Okay guys, एक चीज़ थोड़ी सी मैंने खुद भी नोटिस की, we have a lot of final year students from my batch here, जिनको मैं personally recognize करता हूँ, Aisha is one of them। तो I'll make sure कि because these guys, मैं इनको जानता हूँ, they are very good at what they do, different companies में they have experience, और तो maybe you guys can have speaker sessions, because हमेशा इन leads की availability नहीं होगी on different ऑन स्पीकर सेशंस। हम इवेंट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू कोलैबोरेट। अगर आपको लगता है कि यू हैव सम लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल जो आप किसी भी कम्युनिटी में किसी को सिखा सकते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट अभी जीरा का डेवऑप्स का सेशन हुआ था, तो हम वो वाली टेक्नोलॉजीज आगे जूनियर्स को टाइमली सिखा सकते हैं। तो मे बी दैट इज ऑल्सो अ वे फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स
क्योंकि अर्लियर ये स्टूडेंट्स को अक्सर एक्सपीरियंस नहीं होता, तो मे बी दैट इज अ पाथ फॉर यू गाइज एज वेल। लेकिन उसके लिए यू शुड रीच आउट टू द टीम। अगर आप में से किसी को लाइक मुझे रीच आउट करना, आई कैन फॉरवर्ड योर कंसर्न टू द टीम एज वेल। Yeah, definitely. Okay, so I think Muaz, no, उसके बाद है हामिद. How do you prefer .NET for app development or web development? I guess the question था. Yeah, Bilal, .NET, the old. या डॉट नेट की भी अपने यूज केसेस हैं। अब देखो, whether you want to develop an application or a website web application, it really depends on your personal preference, what do you use and what requirements you have. तो ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेस्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जावा में लिखो, कॉटन पे करो, डॉट नेट पे सी हैश पे करो, जावास्क्रिप्ट में करो, इट एट द एंड ऑफ द डे डजंट मैटर कि कौन सी आप लैंग्वेज में सीख रहे हो। आप अगर डॉट नेट पे कंफर्टेबल हो तो यू कैन कंटिन्यू डूइंग ऐप डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट इन डॉट नेट, बिकॉज उसके भी जॉब्स की कोई कमी नहीं है। इफ यू लुकिंग फॉर अ जॉब, तो इट डजंट रियली मैटर कि आप कौन सी फील्ड कर रहे हो। इफ़ यू और लाइक आपको जॉब चाहिए, तो देन इट रियली मैटर्स कि आप कौन सी फील्ड्स में जा रहे हो। यू हैव टू लुक एट द मार्केट कि क्या पॉपुलर है। लेट्स से वेब के लिए पिछले 4-5 सालों से या ज़्यादा मर्न स्टैक चल रहा है, आजकल नेक्स्ट भी चल रहा है, देयर इज़ व्यू भी आजकल थोड़ा पॉपुलर हुआ हुआ है, एंगुलर भी। तो अब एप्लीकेशन के लिए वो उसने उजैर ने बताया कि फ्लटर भी है, रिएक्ट नेटिव भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, उसके आज इतने आजकल में इतने अपडेट्स आ रहे हैं। So one caution effect on job popularity in Yeah. job market. Yeah, of course, पाकिस्तान का सीन डिफरेंट है और ऑब्वियसली बाहर का सीन डिफरेंट है। तो बात लेकिन वही आती है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी यू आर अप्लाइंग फॉर। यू हैव टू, या Sadan, thank you so much. Every technology Yeah, has scope if you are good enough. That's what I'm saying. exactly. If you can just make something, doesn't really matter what language you use, just make it. Yep, even a designer Because is good. आगे, yeah, exactly. Thank you, Mohib. Well, because graphic design has scope, exactly. because आपका प्रोजेक्ट, आपका प्रोग्राम, आपका प्रोडक्ट आगे जाना है क्लाइंट के पास। क्लाइंट डज नॉट केयर कि किस चीज़ में लिखी हुई थी चीज़, उसको सिर्फ आगे एप्लीकेशन वेबसाइट नज़र आनी है, उसको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, वो हमें पता। ठीक है, तो या असेंबली, श्योर, यू कैन डू दैट एज वेल। इफ यू हेट योरसेल्फ, यू कैन डू इट इन असेंबली। तो If you really रियली want to go डजंट to मैटर कि कौन the assembly, yes. तो या यू कैन जस्ट कोड इन एनी लैंग्वेज, इन एनी लैंग्वेज, दैट्स द थिंग। So Okay, yeah, so that's Bilal, all. there's a question of Zunaira Malik, if you can read that, just If little I'm a about. beginner in field, say web dev, for example, yeah, it's yeah, just started. It's very ambiguous advice, लेकिन just started. आपने web development सीखनी है, write a website. That's how you learn. आपको वेबसाइट नहीं लिखनी आती, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, यू हैव चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है। यू लाइक इवन हाफ ऑफ द टेक्नोलॉजीज आई वर्क इन, उसमें अगर मुझे कुछ चीज़ ना पता हो, मैं जीपीटी से लिख पाता हूँ, बिकॉज आई हैव टू डिलीवर अ प्रोडक्ट। आई वर्क प्रोफेशनली एज अ डेवलपर, तो मेरे पास टाइम रिस्ट्रेंट आता है एक, तो आई हैव लिमिटेड टाइम टू डिलीवर दैट प्रोडक्ट। तो व्हाट आई डू इज मेक द प्रोडक्ट फर्स्ट। प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया, काम कर गया, मैंने आगे लॉन्च कर दिया। Then after I'm done, I go back to my code and I go through it one by one and understand how it works, ताकि मुझे आगे जाके कोई कमी ना हो, कमी पेशी ना हो। अगर कोई बग आता है तो मुझे इसका आइडिया हो जाए कि ये इशू इसमें कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो बेस्ट एडवाइस इज टू जस्ट स्टार्ट। अगर आपको स्टैक की ज़रूरत है, लाइक आई सेड, वेब में मर्न पिछले 10 सालों से चल रहा है और मोस्ट लाइकली चलता रहेगा पाकिस्तान में स्पेशली। तो यू कैन कंटिन्यू वर्किंग ऑन दैट। आप स्टार्ट करो HTML से, CSS से, ग्रेजुअली मूव ऑन टू जावास्क्रिप्ट, देन टाइपस्क्रिप्ट एंड देन लर्न अ फ्रेमवर्क। यही एक रोड मैप है। द मोस्ट यू कैन डू इज जस्ट राइट द कोड एंड progress further. So that is the best approach. Just hands-on approach, do it and learn. Yeah, and just to add on, Zunaira जो इसने audition की थी कि basically about to start, you see every time you decide to go for something, someone कि इसका स्कोप नहीं है या सैचुरेटेड है। सो सी सैचुरेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट करो, सैचुरेशन इसमें है बिगनर्स की, बहुत बिगनर्स की। तो इफ़ यू हैव अ गुड स्किल सेट तो आपकी मार्केट सैचुरेटेड नहीं है एंड आपका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। सो डेट ऑल इट मैटर्स कि आपको एक्चुअली में अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करना है, बाकी टेंशंस को छोड़ के। जस्ट फोकस ऑन दैट। Okay, I want to go into web to game development in future, but I want to get in hands on front and back end cloud. Also, I want a Java app. It's virtually delaying my game dev journey. I think
Uzair or Bilal can answer that very well because you guys are in the industry as well. So yeah, What's the Uh, question? Yeah, I Uzair, want to you go can into answer. game development in future. बेसिकली आपने ना यहाँ पे तीन चीज़ें मेंशन की है फ्रंट वेब जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड है क्लाउड है एंड आई आल्सो वांटेड टू जॉब एज सून एज पॉसिबल सो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि एक चीज़ पे फोकस करो अगर आप एक टाइम पे वेब भी करोगे क्लाउड भी करोगे गेम डेव भी करोगे तो अगर कोई भी चीज़ सही से नहीं होगी तो फोकस एक चीज़ पे ही रखना है ठीक है उसको करना है अच्छे से उसी का एक्सपर्ट बनना है और जल्दी नहीं करनी जॉब मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है शुरू में 6-7 महीने थोड़ी सी स्ट्रगल इंसान को करनी पड़ती है ठीक है और पहली कोशिश पहली प्रायोरिटी आनी करनी है कि आप फ्रीलांस की प्रोफाइल अपनी सेट कर सको ठीक है उसके साथ साथ आप जॉब ढूंढो कोई ना कोई एक चीज़ तो आपको अच्छी चलेगी या आपकी जॉब चल जाएगी या आपकी फ्रीलांस चल जाएगी तो मैं ये कहूँगा कि पहले एक चीज़ एक्सपर्ट कर लो तो अगला जो प्राइमरी इनकम सोर्स बन जाए बेशक आप क्लाउड कर रहे हो बेशक आप वेब कर रहे हो या गेम कर रहे हो तो अगर आपकी इंटरेस्ट गेम में है तो गेम कर लो अगर क्लाउड में है तो गो फॉर क्लाउड अदर देन you can go for web. Yes. Okay. So Masroor Ahmed question है, can you conduct demo or bootcamp into cloud computing because it's very important, super in my point of view. Yeah, we will have इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इस पे एक सेशन भी करवाएंगे कि हमारा जैसे हमने भी बताया स्पॉइलर कि हम एक क्लाउड इंजीनियर फ्रॉम गूगल इज कमिंग टू यूएमटी एज वेल. सो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे और आई थिंक यू आर इन द पार्ट ऑफ टीम एज वेल. सो आपको पहले पता चल भी जाएगा. ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम बूट कैंप्स और ये सब चीज़ें भी इसमें करवाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. Okay, so how do you guys manage all this side by side learning? It's all passion, Zunaira. It's all passion. Give back to community. And आप थोड़ा सा मेरे ख्याल है आप फर्स्ट सेमेस्टर से आप थोड़ा सा सीनियर हो जाओ लाइक फोर्थ फिफ्थ में आ जाओ थोड़ा कम्युनिटी के अंदर आप इंटरेक्शन करोगे ना. आई एम सेइंग दिस विद माई एक्सपीरियंस. 2-3 साल जब कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं तो एक चीज़ आप सीखोगे. टेक कम्युनिटी चलती ही यू कैन से सर्विंग पे है कि वन पर्सन जो सीनियर है वो जूनियर को सिखा रहा है. लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट ना. स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब, कोरा, रेडिट, यू हैव सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जो कि बने किसके लिए हैं, मेजरली डेवलपर्स के लिए. डेवलपर्स वहाँ अपने ग्रुप्स बना रहे हैं, डेवलपर्स अपनी कम्युनिकेशंस कर रहे हैं. ओपन सोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी ने आपको दे दिया. ठीक है. सो ये कम्युनिटी चलती ही गिव एंड टेक पे है. सो ये पैशन आपके अंदर होना चाहिए. सो इट्स ऑल अबाउट पैशन. Time management is myth. Just be honest. Okay. I get lost so easily. Zunaira, GitHub के ऊपर इंशाल्लाह हम बहुत जल्द Git एंड GitHub के ऊपर हम प्रॉपर बूट कैंप करवाएंगे. तो इंशाल्लाह आपकी सारी क्यूरीज और ये सजेशंस आपकी वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी. We have a lot to offer and yeah, don't worry about that. Yeah. Okay, anything else? For AI, ML, Kaggle and Hugging Face is a godsend. Web dev would disagree. Okay. Yes, anything else? Uh, I think so. So it's ended now. Thank you. So yeah, guys, that was from our side. Thank you for joining. Pizza party even physical पे तालिब inshallah. What's the difference between Git and GitHub? Okay, so last one is simple. GitHub के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. GitHub is basically a cloud based platform for you where you can upload your code, where you can collaborate with your team. So इसको सिंपल मतलब मैं ऐसे कहता होता हूँ ज़्यादा बिगनर्स को समझाने के लिए. इट्स अ गूगल ड्राइव फॉर कोडर्स. तो आप वहाँ पे वो सारी चीज़ें कर सकते हो. ओके. एंड गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल टेक. इसको बिल्कुल सादा एग्जांपल में ज़रा बिलाल समझाना, बिल्कुल सादा बच्चों वाली एग्जांपल. यार आपकी यही एग्जांपल सही है कि गेट इज जस्ट ए ड्राइव. ठीक है. तो अब बेसिकली देखो मैंने कोड लिखा, आपने कोड लिखा. अब मैंने कोड जो लिखा है आपको कैसे मिलेगा? अब आपको मैं जिप कोड तो नहीं सेंड करूंगा ना. तो लेट्स से आई आई क्या कहते हैं, आई सेंड इट टू अ ड्राइव. जैसे नूर ने बोला आई सेंड इट टू अ ड्राइव. वहाँ जाके कोड अपलोड हो गया ऑनलाइन एंड यू वांट इट ऑन योर साइड एज वेल. आप बस ये कमांड लिखोगे git pull एंड दैट कोड विल बी रिसीव्ड ऑन योर पीसी. सेम सेम थिंग फॉर यू. आप अपना कोड आगे पुश करोगे, वो उसी ड्राइव पे आएगा.
मैं उसको अपनी तरफ ले सकता हूँ, ठीक है। अब GitHub इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ Git। इट्स लाइक इट्स लाइक अ रैपर। मैं बहुत बड़ा लफ्ज़ बोल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन इट्स अ रैपर अराउंड Git, ठीक है। GitHub Git के बगैर कुछ भी नहीं है। तालिब प्लीज डू नॉट, नए लोग हैं, ये बिल्कुल ये ये ना चीज नहीं उनको करनी। ये ना बताओ, ठीक अभी है। डू स्टैश नॉट रन दिस लगाएंगे कमांड एवर, उसमें। do not you will never need this command ever in your life, and please do not, अगर आपकी इंशाल्लाह जॉब लगती है, do not use this command, you will get fired on the spot। तो like literally on the spot। नहीं, तो ऐसी कंडीशन में कोई एक्सेस नहीं देता। Means अच्छा मैं गाइस, पोस्ट वैसे ऑन सीरियस नोट, मैं ना मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊं विच मैनी पीपल डोंट नो। तो यार ये अभी गिट के लिए सारा भूल जाओ कि गिट नाम की कोई चीज़ है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी, एंड इट विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो गिट से पहले एक चीज़ यूज़ होती थी, SVN। तो बेसिकली होता ये है कि आपने अब बहुत सारे लोग एक सिंगल चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक ही गूगल, जिस तरह गूगल का कोई डॉक्यूमेंट होता है गूगल डॉक्स का, आप कोलैबोरेटर मोड ऑन करके डिफरेंट लोग एक वक्त में उस पर काम कर सकते हो, राइट। तो उसमें अगर मैंने कोई वर्ड लिखा, आपने डिलीट कर दिया, तो वो फौरन से चेंज हो जाएगा, राइट। लेकिन मैं अपना डेटा एडिट कर रहा हूँ, आप अपना डेटा एडिट कर रहे हो, तो गलती से आप मेरा डेटा डिलीट कर दोगे, तो मेरा तो काम ज़ाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, राइट। इस चीज़ को, ये सेम चीज़ जो मैंने आपको डिस्क्राइब की, कोडिंग में पहले इस तरह से यूज़ होती थी, ठीक है। मैनी पीपल आर वर्किंग ऑन द सेम फाइल साइमल्टेनियसली। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वर्जन कंट्रोलिंग आई। तो जितने भी वर्जन कंट्रोलिंग मेथड्स हैं वो सारे गेट बेस्ड ही हैं। गेट एक नाम है, वर्जन कंट्रोल में ये होता है कि आप एक ही कोड की डिफरेंट, एक कोड एक सेंट्रल रेपोजिटरी एक जगह पे पड़ा हुआ है, उसकी एक कॉपी आपके पास है, एक मेरे पास है, एक बिलाल के पास है। वी विल वर्क ऑन आवर ओन कॉपीज। हम जो मेन सेंट्रल उस पॉइंट है उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने ओरिजिनल, आपके पास क्लास में किसी बच्चे ने आपको नोट्स दिए, वो ओरिजिनल नोट्स हैं, कलर प्रिंट है, समझ लो, आपने उसको खराब नहीं करना। आप उसकी फोटोकॉपी लोगे एंड यूल वर्क ऑन द फोटोकॉपीज, ठीक है। आप उसमें मिस्टेक्स एडिट करोगे, आप उस नोट्स के अंदर आपने सारी मिस्टेक्स अपनी फोटोकॉपी पे निकाल ली और मैंने अपनी पे निकाली, बिलाल ने। एंड में हम उन फाइनल नोट्स के ऊपर कोलैबोरेट करके चेंज कर देंगे। दिस इज व्हाट वर्जन कंट्रोलिंग इज। इतनी सी बात है। Yeah, I think that answers your question. And Talib, your question क्या वो डिस्कॉर्ड वाला, we do have a discord जैसे बिलाल ने आपको बोला, बट ये थोड़ा सा जरा अभी डेड चल रहा है। आपको सीक्रेट्स बताता हूँ, ओके। तो नहीं, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर डिस्कशंस भी करेंगे। आप कम्युनिटी में भी ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन हैव डिस्कशंस, यू कैन सेंड योर सजेशंस, फीडबैक्स, वी आर ओपन फॉर ऑल। थैंक यू गाइस, Yep. थैंक यू। आफ्टर दिस सेशन लाजमी सी बात है, हम लोग कम्युनिटी हमारी बड़ी एक्टिव है। आप लोगों को जीपीटी से भी फास्टर आंसर्स या आपकी क्वेरीज जो भी होंगी वो आंसर्ड हो दैट्स जाएंगी। दैट्स द हमारी थिंग। हमारी 2000 से ज़्यादा के मेंबर्स वगैरह हैं हमारे कम्युनिटी चैनल में। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, हमारे डिफरेंट डोमेन के सारे उसमें होंगे मेंबर्स, डिफरेंट सेमेस्टर के होंगे, डिफरेंट प्रोग्राम्स के होंगे, आपके सारे सवाल आंसर हो सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी, अगर FYP, आपको फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या आपको कोई स्टार्टअप का एक्सपीरियंस चाहिए जो हम डील कर रहे हैं, माईपाद अगर आपने सुना होगा, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हम शेयर कर सकते हैं, हम आपको हेल्प भी कर सकते हैं। तो दैट्स द मेन गोल ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है ना, कि हम सारे कोलैबोरेटिव वर्क करें। हमारा यूनिवर्सिटी लाइफ में भी बेनिफिट होता है और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी हम लोग सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके, जो जॉब कर रहे हैं, जो फाइवर वगैरह, अपवर्क वगैरह पे फ्रीलांस वगैरह कर रहे हैं, तो आप सारे एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर सकते हो, एक दूसरे के साथ हेल्प वगैरह ले सकते हो। सो दैट्स द मेन गोल। बाकी इंशाल्लाह आप सारी सजेशंस वगैरह देना, जो भी आप लोगों के पास फर्दर होगी या इवेंट्स वगैरह आप सजेस्ट कर सकते हो, हम ज़रूर उस पर देखेंगे। तो बाकी थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सो इंशाल्लाह हम फिर कम्युनिटी चैनल पे कनेक्टेड रहते हैं। बाकी ज़रूर आप मैसेज करना, हिट अस अप, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आफ्टरवर्ड्स। या थैंक यू ऑल। आप ये मैंने क्यूआर कोड आपके सामने ऐड कर दिया है, यू कैन जस्ट स्कैन द कोड और हैव अ स्क्रीनशॉट, तो आप इसको Yep. बाद में स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू ऑल। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपडेट्स मिल जाएंगी इवेंट्स की, एंड मेक श्योर टू पार्टिसिपेट इन दैट एज वेल। सो दिस इज द थिंग, कम्युनिटीज के अंदर पार्टिसिपेट करने से आप बहुत कुछ सीख पाओगे, स्पेशली द जूनियर्स वन। सो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस गुड नाइट, थैंक यू।